Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, how are you? Hope you are doing fine by the grace of God Almighty and taking your video classes regularly. Girls, we have completed our grammar exercises up till all the tenses in our grammar book. And I hope that you have completed all the exercises as well in your notebook and in your book as well. So today we are going to learn a new lesson from your Ikra English Grammar Book 4. The new lesson is lesson number 10 and it is active and passive voice. Alright, active and passive voice. Now, what is a voice? वॉइस क्या होती है? आमतौर पे हम वॉइस से मुराद आवाज़ लेते हैं, है ना? लेकिन इंग्लिश ग्रामर में वॉइस हम आवाज़ को नहीं कहते. वॉइस इज एक्चुअली अ वे वी चूज टू से समथिंग. राइट, इट इज़ एक्चुअली अ वे वी चूज टू से समथिंग. हम अपनी बात करने के लिए जो तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं, जो तरीक़ा इस्तेमाल करते हैं, उनमें से उन तरीक़ों को हम वॉइसेस के नाम से जानते हैं. ठीक है, और ये दो तरीके ख़ास तौर पे काबिल ज़िक्र हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. ऑलराइट, सो वॉइस इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब that has active and passive voice. So you can see on the board that the structure of active voice is subject, verb and object. ठीक है, ये किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, कि आप उसमें सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है. और आपने अब तक जितने भी टेंसेस पढ़े हैं, ठीक है, जिसमें इनडेफिनिट टेंस था और इसके अलावा कंटिन्यूस टेंसेस थे, परफेक्ट टेंसेस थे, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस थे, दोज ऑल वर इन एक्टिव वॉइस. ऑलराइट, और जो हम पैसिव वॉइस अब सीख रहे हैं उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन बी वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय एंड ऑब्जेक्ट. ऑलराइट, आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू लेटर. लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि इस वॉइस की या इन एक्टिव और पैसिव वॉइस की ज़रूरत क्या है, इसको सीखने का मकसद क्या है. ठीक है, एक्टिव वॉइस हम इस वक्त इस्तेमाल करते हैं when we want to talk, when we want to be direct, or we want to be clear, or we want to be to the point. ठीक है, और we focus on the subject in active voice. All right, or you can say that subject is the doer of the action. यही होता है ना, सब्जेक्ट नॉर्मली डूअर ऑफ द एक्शन होता है. ठीक है, यानी वो काम कर रहा होता है, वो एक्शन कर रहा होता है, तो वो आपका एक्टिव वॉइस कहलाता है. Whereas passive voice is used when we want to focus on the receiver. अब रिसीवर या आप ये कहते हैं कि जिसके ऊपर काम हुआ होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, वो हम उसको रिप्लेस करते हैं. ठीक है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है, और हम पैसिव वॉइस इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं जब हम अपने डूअर को हाइड करना चाह रहे होते हैं. ठीक है, हम बताना नहीं चाह रहे होते कि हमारा डूअर कौन है, और या क्योंकि या तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, अंडरस्टूड होता है, या अननोन होता है, या अनइम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है, और या फिर हम अपनी बात को वी वांट टू बी मोर सॉफ्ट, यानी बात की संगीनी को कम करने के लिए हम कभी कभी पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं. यूजुअली पैसिव वॉइस इज यूज्ड मोस्टली बाय द नेटिव पीपल. ऑलराइट, बट अदर पीपल आल्सो यूज दिस वॉइस. नाउ आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल. ही फ्लाइज अ काइट. This is a sentence and you very well know that this tense belongs to indefinite. Alright, ये indefinite tense है. तो he over here is a subject, flies is the verb and a kite is the object. Alright, he is the subject as well as the doer of the action. ठीक है, because he जो है, जो कि सब्जेक्ट है, ये डूअर इस वजह से है क्योंकि ये एक्शन कर रहा है. ठीक है, और वो क्या है, एक्शन फ्लाइंग का एक्शन है जो कर रहा है. और किस चीज़ की फ्लाइंग कर रहा है, किस चीज़ पे, काइट के ऊपर. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास काइट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है और रिसीवर
ठीक है, वी कैन से दैट द ही इज द डूअर ऑफ द एक्शन एंड kite is the receiver of the action. Okay, so its passive voice would be a kite is flown by him. All right, a kite is flown by him. Now what we did over here is that we switch the places of the doer and the receiver, or you can say the subject and the object. हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह को बदल देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पे ले आते हैं और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हैं, ठीक है, फर्दर चेंजेस के साथ। लेकिन फिर हम इसको पैसिव वॉइस इसी तरह बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो चेंजेस आते हैं वो हम वर्ब में चेंज करते हैं, ठीक है। इनडेफिनिट टेंस है तो हम इनडेफिनिट टेंस प्रेजेंट है तो हम यहाँ पर बी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बी वर्ब हमारे पास काइट की मुनासिबत से, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने प्रेजेंट का सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लिया, बी वर्ब लिया इज़, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें लाजमी इस्तेमाल होती है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आप पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। कौन से टेंसेज में आपने इस्तेमाल की है? जी, शाबाश, रिकॉल करें कौन से टेंसेज में हमने वी हैव यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब? यस, इन आवर perfect tenses. In perfect tenses we have always used third form of verb. Then the question arises that what is the difference between the third form in passive voice, and how would you differentiate between the passive voice and in perfect tense? So in perfect tenses, if you recall, you can think that third form does not come alone. It has to take has, have or had with it. Alright, but when you see a be verb followed by the third form, then it is the passive voice. Okay, see the structure? The be verb is followed by verb third form, that is past participle. Alright, and then comes the by. This is the preposition that we add, and then the object. Alright, so over here by is preposition and him is the subjective form of he. Alright, now girls, one thing that you have to understand very clearly, you have to keep this in mind, that whenever we are asked to change passive active into passive or passive into active, you have to remember that passive voice is only made up of transitive verbs, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब इसमें इस्तेमाल होते हैं, intransitive वर्ब इस्तेमाल नहीं होते। Now what is transitive verb and intransitive verb? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जिसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, यानी एक्शन ट्रांसफर होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल, आई रीड द न्यूज़पेपर। I read the newspaper. All right, over here I is the subject, read is the verb, and newspaper is the object. All right, so the action has a direct object, the newspaper, ठीक है। लेकिन the sentence the ship sank rapidly, the ship sank rapidly, over here the ship is the subject, the sank is the verb, but rapidly is not the object. Alright, the action of sinking is not being transferred. So we can say that this is an adverb, but not the object of the verb sank. So remember that transitive verbs are only used in passive and active voice. Okay? ओके गर्ल्स, अब आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इनका इस्तेमाल कब होता है और क्यों होता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव होता है, हमारा डूअर एक्टिव होता है, और पैसिव वॉइस हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारा रिसीवर एक्टिव होता है, ठीक है।
और पैसिव वॉइस आम तौर पे हम जो है वो अपनी डे टू डे लाइफ में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। कभी न्यूज़ रीडिंग में, न्यूज़ रिपोर्ट्स में आप इसका इस्तेमाल देखेंगे, एंड इट ऑल्सो कैन बी यूज्ड इन लीगल डॉक्यूमेंट्स, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन रेसिपीज़ एज वेल। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल तो बहरहाल हमारी ज़िंदगी में होता है और अक्सर होता है। ठीक है, so what you have to do is to learn how to identify the doer and the receiver of a sentence, and you have to identify the voice also. For this purpose we will do the exercise on page number 31 of your book. So open up page number 31. Yes students, you can see that lesson 10 is active and passive voice. You can read the definition yourself. It is the same as I have explained to you. And then we have to do exercise A. It reads, write whether the sentence is in active or passive voice. आपको ये देखना है कि आपको जो given sentence है वो आपका active voice है या passive voice है. Alright? The teacher will have scolded her. The teacher will have scolded her. कौन सा वॉइस है? Yes. It's an active voice. All right. Then taxes are paid by us. See the structure? Taxes are paid by us. Taxes is your subject. Are is the be verb. Paid is the third form of verb. By is the preposition that we use. And us is your object. Alright? So, it could be passive voice. Alright? Girls, remember that only and only third form of verb is used. Past participle is the only form of verb that we use in our passive voice. Alright? Now you have to do the rest of the sentences yourself. I will read it out for you. He took 2 catches in the match. Alright? Recall the tense yourself, but only write whether it is passive or active. The answer was given by him. She was doing homework. They were disturbed by us. The teachers were checking notebooks. He wasted his time. Exercise is taken by me daily. You have posted a letter to your friend. Alright, these are 10 sentences altogether, and you have to write whether they are passive voice or active voice. So, note down your homework. Alright girls, your homework is page number 31, exercise A. I hope you will easily do this exercise. Till we meet again inshallah in our next video class. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.